KIIT session को Professor Satpathy को request करूँगी तांकर session start करें। Good morning to all of you. I am Dr. Satpathy from KIIT Bhubaneswar. I am working as assistant professor, senior assistant professor in the School of Mechanical Engineering. Dr. Anna invited me as one of the speakers for this Bani KIIT Bani scheme. Data actually more a research area. Although I am from a traditional background, my research area basically on welding and coating. But few years back, we both Dr. Misra and me started working together in the field of 3D printing, or we can say additive manufacturing. Basically, our programs are from the KIIT Dental Institute, KIIT's So, a serious patient has jaw cancer. So, replacement jaw printing saddle जो केस रे आमे दिनों या ऊपर काम करना start and now we are in the process of building a bioprinting lab in our KIIT. KIIT of which doctor अछंती and some other faculties are also there. Collaboration करके हम लोग अपन ଗୋଟେ process ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ bioprinting କରିବୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ artificial heart or artificial kidney हो you can do and we can do certain experiments on that. So Dr. Misra has covered almost all of it. Doubt, I think some of the slides may be repeated. आपको boring में भी लगी पाए, क्योंकि ना Dr. Misra सब लोग को कोई सच हो. But there are certain points what I observed in the previous talk. We have the mentality to adapt the negativity first. आमों करो चिंताधारा को ना हमें प्रथमे negative ideas को प्रथमे हमें adopt करो. rather than positive ideas. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ एग्जांपल ଦେବି फ्लिपकार्ट Amazon ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁ କିଏ 1 स्टार रेटिंग ଦେଇଛି ତାର ରିଭ୍ୟୁ ଟା କଣ ମନେ ନାହିଁ ତ ଯେକୌଣସି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବା ତାର ନେଗେଟିଭ ତ ଅଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ତ ଅଛି drawback नथिले there is no scope of enhancement. किंतु हमें बर्तमान 3D प्रिंटिंग रे थिले एबे 4D प्रिंटिंग को आसिले एबे 5D प्रिंटिंग को भी हमें अडॉप्ट करू. So always there is some scope. तो एई जिंस गुडा केते बेले होय ना जेते बेले हमें किछिटा टॉपिक ऊपर किछिटा सब्जेक्ट ऊपर हमें रिसर्च करू एवं एई रिसर्च को माने करंती ना जहां पाखे रिसोर्सेस था जहां पाखे फंडिंग रा अवेलेबिलिटी था. फंडिंग इज वन ऑफ द वाइटल फैक्टर. हमें वर्तमान जो लैब का सेटअप करिया को चाहू छु KIIT रे दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 5 crore. ये लो question is who will give us that amount of money and there is a high chance of failure. हमें लैब तक सेटअप कर दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आने की हमें रखी दो. We already visited Singapore, we already visited the different labs
across the globe. तापर हम मुंडरे गोटे आईडिया आसिला कि नहीं आमे भी हमर निजर बायोप्रिंटिंग लैब गोटे सेटअप करी किंतु देयर इज चांस ऑलवेज कारण आपण माने मे बी रिसर्च करी थिबे कि ना करूचंती आपण जानिचंती जे ऑलवेज देयर इज a 50-50 चांस कि 90-10 चांस फेल होवार चांस अधिक सक्सेस होवार चांस कम बट आमे लागी रहिया दरकार तो बर्तमान मु किछि आपन को रिसर्च एंड स्टार्टअप्स कोन अछि कारण स्टार्टअप्स आल्सो प्ले a very vital role without the help of the startups we cannot build a particular product हम पर आइडिया अछि being a researcher being an academician we have the knowledge and we have that theory part but how to implement our theory into the practical field तो ता पई हमकु किछटा ऑर्गेनाइजेशन हेल्प हमकु पड़े that is from startups we cannot directly approach to the strategies it is a very huge company ताको पाखरे established technology अछि and they are not going to support you काइना ताकर जो टेक्नोलॉजी अछि जो थिंकिंग अछि से सही तरह ही काम करे से माने आपन का आईडिया को नेबे नाही बिकॉज़ द क्वेश्चन रिमेन्स से दैट देयर इज अ हाई चांस ऑफ तो सही जो हमें स्टार्टअप्स विषय में कथा हवा फॉर द इन दिस प्रेजेंटेशन these are the outlines हमें प्रथम इंट्रोडक्शन आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी काहेना आपण ऑलरेडी गाडी छथि टेक्नोलॉजी ओवरव्यू रिसर्च हाइलाइट्स कौन रिसर्च हम करि परिबा को एरिया रे रिसर्च होई परिबो आपण मन को केते जण 3D प्रिंटिंग ऊपर काम करछथि काइनी एरिया राइट 3D प्रिंटिंग ऊपर किबा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऊपर के काम करछथि कि ओके सो जदि काम करू नाहंती डॉक्टर मिश्रा ने कहवा अनुसार it is not limited to the mechanical field it can be applicable to the mechanical field to the automotive field to the electronics field for making PCBs micro PCBs in the civil field also construction area रे भी हमें काम करि परिबा तो सेटा हम देखिबा what are the researches now going on in the field of 3D printing or additive manufacturing then startup ecosystem कौन India startup ecosystem on basically on the additive manufacturing and specifically focus on the additive manufacturing तापर हम किसी केस स्टडीज देखिबा कोन कंपनीज कोन बनौछंती सक्सेसफुली प्रिंट करूछंती सेटा हम देखिबा व्हाट इज द रियल मार्केट ट्रेंड करेंट मार्केट ट्रेंड कोन रिसर्च ऊपर केते रिसर्च होउची केते पेटेंट और आईटीआर हमें फाइल करूछे सेटा हम देखिबा चैलेंजेस देखिबा फ्यूचर डायरेक्शंस हमें कहां पर जाएंगे फ्यूचर में हमें कहां पर काम करना है so this is the introduction 3D printing means it is a transformative process from CAD model to the object final object that is not the 3D printing but what is it transformative process this is one of the very important term एठी हमें कौन करू ना हम पता है डिजिटल मॉडल है डिजिटल मॉडल इन द फॉर्म ऑफ CAD डिजाइन जो कि आपन 3D मॉडलिंग का है ता दरे हमें डायमेंशंस है ता दरे सब प्रकार फीचर्स है किंतु सेटा जतबे .stl फॉर्मेट को ट्रांसफर होते से समय 3D फीचर्स न रहे कि एटा 2D को कन्वर्ट जो कि केवल डायमेंशंस वगैरह रहे आउ किछि फीचर्स रहे ना लाइक सरफेस प्रॉपर्टीज को टाइप ऑफ सरफेस और एवढा किछि रहे केवल थाए तार डायमेंशंस और पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स सेटा को तापर हम स्लाइसिंग करू यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एटा ଗୋଟେ सॉफ्टवेयर बेस्ड ଆମେ जो कंपनी रो मशीन आनिबु सेही कंपनी ता सहित ଗୋଟେ सॉफ्टवेयर ता प्रोवाइड करिଥାଏ जेमिति कि एठी हमर छोट प्रिंटर के जोटा अछि
माने प्रोवाइड करथांती जो तरी के स्लाइस इन द सेंस कोन ना जो एचटीएमएल फाइल ता हमें जोटा दो सेटा तो से डिफरेंट एंगल में स्लाइस कर इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन अस and that is known as one of the control parameter हमें स्लाइस किमिति करिबा जो तरी की हमरो एरर कम आसीबो पोरोसिटी कम आसीबो जति को ड्रॉबैक जति को हमरो लैकुना जति हम को ओवरकम करिबो दैट इज द स्लाइसिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट स्टेप तापर हमें सेटा को स्लाइसिंग जो कला स्लाइसिंग लैंग्वेज को हमरो 3D प्रिंटर का बुझी पारिबो से कैड मॉडल को बुझी पारिबोनी कि .html लैंग्वेज को बुझी पारिबोनी आफ्टर स्लाइसिंग ऑफ द html फॉर्मेट फाइल then that particular model can understand what the user actually wants to tell. So that is layer by layer printing select project. Process आपन को हाथ रे अछि आपन को भी प्रोसेस यूज कर परिबे ADM करंतु SMS करंतु SML करंतु log करंतु manipulated object manufacturing करंतु जाई करो that is up to you but these are the basic process these are the basic principle behind it and finally post processing करियो पड़िबो बाहर किछटा सपोर्ट मटेरियल था ताकू हमें सफा करियो पड़िबो देन हम ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପାଇबा ଗୋଟେ फिनिश प्रोडक्ट पाइबा सो दे आर द बेसिक स्टेप्स कई जन क्वेश्चन पचारछन जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग व्हाई वी चूज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कोन दरकार if the traditional manufacturing process is already there in the market, then why we adopt additive manufacturing? What is the real need? You can see these comparisons. Additive manufacturing is a layer by layer addition way, but in subtractive manufacturing, either the unwanted material can be removed from the bulk material in the form of cutting operation. Okay, it may be drilling, it may be milling, it may be grinding. or it may be a formatting process. Formatting process माने कौन ना गोटे shape थीबो we can convert one shape to the another shape to make a final product. Example is extrusion or forming. So that comes under the traditional manufacturing. किंतु additive manufacturing रे हमें layer by layer भाग it is a additive process. Design complexity जो हमें देखिबा additive manufacturing process can handle intricate lightweight structures or very complex structures can be made by the additive manufacturing. Previous जो स्पीकर हमको देखौଥିଲେ जे केते intricate shape जो दीटा पैटर्न भीतर जो zigzag टाइप के जो पैटर्न्स आस्तुला ताको हमें कोन कहू ना इनफिल पैटर्न्स को ता भीतर हमें लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर हमें बॉडी करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर हमें जानी जो एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल बीसीसी एचसीपी तो ए टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी हमें हमर ऑब्जेक्ट भीतर भी प्रिंट कर पाए तो इट सपोर्ट्स द इंट्रिकेट शेप बट इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इट्स हियर it is limited by the tooling and the machining parts. CNC cannot do very complex shapes. Normal machine तो छाड़ी दियो CNC भी हमको very intricate shapes दे पाइबो नहीं with that precision. Then there is a requirement of the tooling that means here no custom tooling is required. कुछ दरकार नहीं. If we are using a FDM machine, only the extruder is there. Extruder use करंतु अपन मोर काम से कर दो. किंतु सही जगह रे जदि हमें गोटे CNC machine ने करिबा त तमे कोन दरकार जिग्स दरकार फिक्सर्स दरकार तापे स्पेसिफिक टूल दरकार ड्रिल बिट हमर दरकार जदि हमें मिलिंग करिबा त हमें मिलिंग टूल दरकार त तापे स्पेसिफिक टूलिंग हमको दरकार. So there is a high requirement of the jigs, fixtures, models, etc. Then additive manufacturing is almost net zero waste of produce way or near to zero waste of produce way.
किंतु ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रे हमरो एक्सेस मटेरियल रिमूव करा जाए जो एक्सेस मटेरियल रिमूव करा जाए ताको हम कोनोसी केस रे यूज करि परना सो देयर इज अ हाई wastage of material in case of traditional manufacturing volume if we took care of the volume efficiency basically hame eta puri disadvantage koi pariba or it may be advantage in some other applications small or ideal volume pai या कस्टमाइजेशन pai sir jo देखौतना आपन को कस्टमाइजेशन हमें हम हिसाब रे बने बुझी ना नहीं तो ता pai हंदे हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को यूज करबे किंतु जत्ता बेले सेटा मास प्रोडक्शन हबो हाई वॉल्यूम रेट रे प्रोडक्शन हबो देन यू कैन हैव द ट्रेडिशनल देन लीड टाइम केते टाइम दिए गोटे प्रोड्यूस करिया पे 7 दिन कहले गोटे 2 दिन में घर बनी होछ जदि हम एटा ट्रेडिशनल वे रे करिबा एटा 6 मास प्रोसेस रे तो एठी हमर जो प्रोसेसिंग टाइम ता अछि प्रोसेसिंग टाइम रे बहुत कम and lastly cost efficiency it is very cost effective काहे कि मटेरियल भी हमर लोकलाइजेशन नहीं गलानी हम जो भी मटेरियल हम यूज करबा पीएलए यूज करो थर्मोप्लास्टिक्स पीएलए मींस थर्मोप्लास्टिक्स या मेटल पाउडर्स जहां भी करो सेटा में लोकली पाई जाउची किंतु सही केस रे जदि हमें ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को देखिबा जदि एटा हाई प्रोडक्शन केस रे यूज करबा देन इट इज इकोनॉमिकल otherwise it is very expensive okay during my PhD stage one offer came to us कि हमर आपन जो फिलिप्स रो जो टी बॉल जो आपन देखु ना टी बॉल रो गोटे कंसल्टेंसी आस्ते कोन तार परिवार अछि ना तार गोटे डाय परिवार अछि ताकि कि हमें जदी प्लास्टिक मेटल को जदी हमें ढाळीबा से डायरे सेटा मिसिबो एवं सेटु हमें से प्रोडक्ट को आनी दे इट इज लाइक ए कास्टिंग प्रोसेस से डायरो दाम होचे आगे 4 कोटी टका टी बॉल प्रो हमें केते टका रे किनुचे 300 400 टका रे किनुचे जो टी बॉल अछि तार एक्चुअल प्रोडक्शन रेट हो जाए 30 टका 40 टका 30 तादर कोन अछि तादर तो एलईडी टा अछि आ गोटे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टे अछि जोटा कि चाइना रे रेडी अवेलेबल अछि ताको आना फिक्स करो बिक्री करो 40 टका रो 50 टका होछि तार प्रोडक्शन कॉस्ट किंतु फिलिप्स हमको बिक्री करछ केते टका रे 300 रो 400 टका रे काहे कि ना जो डाई कारण जो डाई मेकिंग ता एते कॉस्टली तो तार कॉस्ट हम सेतरा आडे अछि किंतु जदि सही केस रे से डाटा ऑलमोस्ट इट कैन हैंडल अप टू 1 लाख पीसेस ओके तापर से डाटा कॉस्ट आउट दिबो जदि हम 20 टा प्रोडक्ट पे जदि डाई बनवा से होबो की तो सही केस रे यू कैन गो फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग The additive manufacturing recent times growth is there is a high growth and high demand in the additive manufacturing also. Basically, in case of industrial grade 3D printing, हमारा घर कंस्ट्रक्शन हो कि बायो इंक अवेलेबिलिटी हो जो कि हमें छोटे छोटे ऑर्गन्स गुड़ा हमें प्रिंट करी करूचे तो से इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटिंग रे इट कैन बी हाईली एप्लीकेबल प्रोसेस 3D printing process. There is an increased use of the multi-material and large format printing process. Multi-material का माने होची हमें printing time रे मु आपन मानक देखैबी printing time रे हमें गोटे material यूज करूने if there is a need we can use different types of materials but that two materials should be two or more materials should be compatible in nature हमें प्लास्टिक सहित मेटल्स को करि परिबा यूज करि परिबा but it is not advisable but one type of plastics can be used with another type of plastics suppose PLA सहित ABS करिबे
but depending upon our application. Koudi ame apply karuche. So it can support the multi-material concept. Here, integration of AI and machine learning, nowadays it is very popular. Artificial intelligence हो, machine learning हो, Internet of Things हो, IoT हो, तो एगुड़ा को बहुत हमें यूज करूँचे in case of manufacturing process. Industry 4.0 थी ना, अभी Industry 5.0 आसी हो गई. तो ये सब केस रे हमें additive manufacturing का मिली करेगा. And there is a growing focus on the sustainability. सब को केस रे देखो. Now the government of India is fully focused upon the SDGs, Sustainability Development Goals. अपना माने जानी थी बे, but almost it is compulsory to every university also. अपन माने जो product बनाऊँगी, that should meet the criteria, one of the criteria of the 17 goals. There are 17 goals in the SDGs. तो अपन माने तो गोटे criteria को से fulfill minimum, fulfill करने पड़ता है. तो सस्टेनेबिलिटी माने होचे कोन हमें केते हम नेचर को प्रोटेक्ट करूचे हमें केते वेस्ट यूटिलाइजेशन करूचे इट इज वेरी इंपोर्टेंट तो एई सब एरिया रे हमर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रो ग्रोथ अछि जदि हमें एई एरिया रे जदि हम फोकस करिबा देन वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट केस सो ए प्रोसेस ऑलरेडी सर कवर करिसोंती. So these are the usual technologies used in the 3D printing process. Wide photopolymerization, material extrusion, powder bed fusion, material jetting, binder jetting, sheet lamination, direct energy depositions. These are the techniques. These are the processes by which we can do the 3D printing. UV light पकाई हमारा जो molten plastics अच्छी. Molten plastics आपण एबीएस प्लास्टिक नहीं पारती, पीएलए नहीं पारती, जो भी टाइप ऑफ थर्मल प्लास्टिक्स नहीं पारती, सेटा molten में थाए, molten अवस्था में थाए, मेट अवस्था में थाए, तापर हम यूवी लाइट को पकाई सरना परे सेटा टाण हो जाए, हार्ड है. So that is known as the hard polymerization. एकर कौन है? स्टेरियोलिथोग्राफी प्रोसेस या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलपी प्रोसेस, जो तरीके हमें पूरा यूवी लाइट पकाई के ताको हमें curing code. So it is that type of process. आपण माने जदि दांत के फिलिंग करथिबे रूट कैनालिंग या दांत के करथिबे से गोटे कोन करे डॉक्टर मु निजे फील करछि जे रूट कैनालिंग करे ता भीतर गोटे कोन मटेरियल टा पूरा तापरे गोटे यूवी लाइट गोटे टॉर्च टाइप का थाए सेटा को दांत पाखरे देखाय क्यूरिंग हो. दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लाइट कंसिडरेशन. सेम वे मटेरियल एक्सट्रूजन जोटा आपन सामने रे चलछि एटीएम मशीन, फ्यूज डिपोजिशन बॉन्डिंग मशीन और फ्यूज फिलामेंट मशीन, जो तरीके हमें मटेरियल टा को थर्मोप्लास्टिक्स यूजली हम यूज करू पीएलए हो एबीएस हो वेरियस या कंपोजिट्स मटेरियल भी हम करि परिबा. कंपोजिट भी हमें आज वन ऑफ द मटेरियल हम यूज करि परिबा इन केस ऑफ 3D प्रिंटिंग. तो ताको हम एक्सट्रूड करके लेयर बाय लेयर से डिपोजिट करि that is that comes out the material extrusion. Powder bed fusion में सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो जो तरीके मेटल पाउडर वाले बेड ऊपर रहता है लेजर लाइट पे पड़े सिंटरिंग प्रोसेस हो या मेल्टिंग प्रोसेस हो जो एक साथ होता है से तरीके से बाइंड देखो गोटे जो अनुसार से स्पार्किंग करे जो वीडियो आपन देखुଥିଲେ से सही अनुसार ऑब्जेक्ट को बनै छै. Powder bed fusion, material jetting, so these are the common technologies that are used to build a product. In case of 3D printing. So, sir आपको बहुत different types of 3D printing processes देखे हैं. तार किसी 3D printing process जोटा कि हमारा वर्तमान फोकस रे अछि या रिसर्च होउची सही टॉपिक्स उडा हम जनरली डिस्कस करछि. One is from fused deposition bonding. It is a very popular technique, and most of the research are doing on this process, that is the ADM machine, ADM technology. Then stereolithography process, selective laser sintering process, direct metal laser sintering process.
and EBM process. EBM में कौन हुए इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग process. Instead of laser source, we are using the electron beam source. That is that only the difference. So and you know that electron beam is a high energy density process. आपनकर जोटी लेजर काम न करिवो जोटी कि आपनकर धर जो बहुत बड़ प्रोडक्ट बनेबार अछि बहुत थिकनेस का बहुत बड़ बनेबार अछि जोटी कि आपनकर लेजर सोर्स जाई न पारिबो तो सेठी हमें इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस रे हम करिबे किबा इमी तो गोटे मटेरियल मेटल पाउडर हमें नबा जहार टेंपरेचर बहुत दरकार तो मेड दो किंतु हम पाखरे एते टाइम नै जोटा कि सार कहतबे जे थरे गोटे जगह मेल्टिंग करके आसला पर पुनी सेकंड टाइम जेतरे आसी से सेतर को मेल्ट हेइतिबो कि न होइतो सेटा डाउटफुल जदि मेल्ट न होउची जे तापर पुनी आउतरे जदि गोटे पकै दउछे ताले देयर मे बी चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डिफेक्ट्स जोटा कि आमे निजे फील करिछु ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस वी आर आल्सो एडिंग दैट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज नॉट द वार्म विषय सुनिछथि where are additive manufacturing welding रे भी हमें additive manufacturing को mix करि सकू तो सही केस रे हमें कोन करू ना गोटे जगह रे वेल्ड देना परे जेतरे सेकंड टाइम सही जगह को आसुची we must ensure that that part or that zone should be solidified जदि से solidified न होई कि जदि टिके molten state रे रहउची then it may create problem it may lead to a defect. So that's why these are the different techniques are used. अपना देखी पारुथिबे ये जो parts जो हम जो साइड में होती है these are the different parts built by these processes. Materials already हम cover कर सकते हैं materials रे हम polymers यूज कर परिबे metals यूज कर परिबे ceramics यूज कर परिबे composites यूज करबे एटा हम ऊपर डिपेंड करे हम एप्लीकेशन ऊपर डिपेंड हम कोडी आपको यूज करी composites जनरली हम ग्लास फाइबर को भी यूज करि परिबा हम कार्बन फाइबर को भी यूज कर परिबा इन आवर in order to make the automatic parts dashboard of the particular automatic मैं आपको देखेंगे किमिति गोटे कार रो डैशबोर्ड ता कंप्लीटली बना होची 3D प्रिंटिंग तो रिसर्च काहे के हमें करिबा व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ द रिसर्च इन द 3D प्रिंटिंग प्रोसेस बिकॉज़ देयर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड आजिकल जुगरे चलिछि कस्टमाइजेशन मते ए सार्ट ता बोलबा मते मो हिसाब से सार्ट होता yes we can print it मते दरकार रिंग ता मते भले होनी सार्ट जेमि देखे मोर रिंग ऊपर पूरा ठेकोटे बसते रहता yes we can print it the company or the startup anyone should not say no to the customer आपण माने जदी गोटे कस्टमर को नो कहि देबे सरिया काम Immediately, the real truth I am saying, when I am speaking, I always speak from my heart. कॉलेज रे वर्तमान पिलाटे आसुची एडमिशन नबाकू इंजीनियरिंग माना नहीं जदि सी मेकानिकल इंटरेस्टेड नुहे डीम्ड यूनिवर्सिटी कथा कहूँ जदि कंप्यूटर साइंस रे सीट ऑलरेडी फिलअप अच्छी हमें बुझा हाँ हाँ किछि द स्टूडेंट्स आर आवर कस्टमर्स हमें ना कहूँ ना कहले तो बेकार मुंडा ना तो सही केस रे हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रे कहा को ना कोई तरीका ना दिस प्रोसेस इज ओनली मीन फॉर दैट सो मास कस्टमाइजेशन या मास पर्सनलाइजेशन जो बड़े हे जाउची जेता नीड आसुची देन वी कैन अडॉप्ट द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर इज एक्चुअली ए नीड डिजाइन फ्रीडम गोटे इंडस्ट्री रे गोटे प्रोडक्ट जतले बना जाए जतले गोटे प्रोडक्ट इंजीनियर सहित गोटे डिजाइन इंजीनियर भी थाए आपण माने
देखिथिबे एबे महिंद्रा गोटे रिसेंट गोटे ईवी लॉन्च करछि ता नाम होछि XUV 9e या XUV 6 देखिथिबे रोड प्रेजेंस देखि सेटा जते बेले प्रोड्यूस करा गला मु तार किछि आर्टिकल्स पढुतली तार जे आई थिंक द डिजाइनर से एक्चुअली पूर्व टाटा रे आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम फेमस डिजाइन इंजीनियर जो जे कि टाटा नेक्सॉन को बनै थे एंड टाटा नेक्सॉन इज हमको कुआ जाय जे टाटा को जदी सर्वाइव करिवार थिना देन टाटा नेक्सॉन ता पछरे अछि तो सही डिजाइन इंजीनियर बर्तन महिंद्रा रे अछि से कोन करे ना हमर प्रोडक्ट इंजीनियर सहित कोलाबोरेटिवली काम करियो पड़े गोटे डिजाइन इंजीनियर and there is a ample amount of time the design engineer is actually investigating on making a particular product किंतु प्रोडक्ट इंजीनियर कोन करे से एक्चुअल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे जेतबे गोटे एक्चुअल प्रोडक्ट रे जेतबे डिफेक्ट बाहरला देन ही शुड कॉन्सेप्ट टू द डिजाइन इंजीनियर किंतु सेतबे तो ऑलरेडी गोटे पार्ट तो प्रोड्यूस हे सारिथिबो ना ता पई तो बहुत बड़े कॉस्ट तादर इन्वॉल्व थिबो ना देन हाउ टू मिनिमाइज दोस कॉस्ट this 3D printing can do that sir जो कहले ऑटो एक्सपो रे हमर जो अपकमिंग मॉडल सुरा आसे सुरा को डिस्प्ले करा जाय 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट सुरा 3D प्रिंटिंग कार हो जहां भी हो सुरा को डिस्प्ले करा जाय ऑटो एक्सपो रे जदी हम ऑटोमोटिव को करियो तार कारण होची कोन ना जते बेले कस्टमर्स फीडबैक देबे किबा जते बेले जो माने एनालिस्ट अछंती जते फीडबैक देबे देन बेस्ड अपॉन दोस फीडबैक्स देन वी कैन चेंज इन द डिजाइन एंड आल्सो इन द फाइनल प्रोडक्ट आवर अल्टीमेट एम इज that product should be adopted by each of the customers so that is the design freedom additive manufacturing gives you the design freedom at any time you can change the design and we can take the product on demand production CAD मॉडल आपन मगरे रहिला जेतबे चाहिए सेतबे प्रिंट किंतु सही केस में जब ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को जीवा तो आमे जति गोटे टूल टे यूज करिचे कि माने जिक्स एंड फिक्सर जति यूज करिचे धर जो सही टा को 5 वर्ष पर यूज करे से काम करू we have to do certain operations on that particular model or jigs or fixtures then only it will work manufacturing दरकार नहीं additive manufacturing local नहीं so we can do the on demand production then coming to the complexity part already it cover kara hai complex means very intricate set or complex sets can be successfully completed by the 3D printing process waste reduction or we can say the sustainability waste reduction में नियर जीरो मु कहनी जे टोटल हम वेस्ट जीरो कर दबा किंतु यस वी कैन एबल टू प्रोड्यूस नियर टू जीरो वेस्ट तो एई सब एरिया बेसिकली तीनटा एरिया रे हमर रिसर्च होची इन केस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वन इज कॉल्ड हाउ टू कस्टमाइज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस what is the nature of your problem what is the complexity of your problem based upon that we can do the additive manufacturing process according to that one and how to reduce the waste हमको आवरी भी काम कर जाय अछि waste हमको केमिति यूज करिवार पड़ियो waste गुडा को केमिति यूज करिवा पड़ियो सेटा भी हम चिंता करिवा पड़ियो गोटे छोटा एग्जांपल दे दोछि जते बेले हम फर्स्ट ईयर बिना जते बेले लेथ मशीन में काम करू सेते बेले गोटे सिलिंड्रिकल टू ऑब्जेक्ट को जते काटंती सेते बहुत गुडा चिप्स बाहर सो केतबेले भी हम चिंता करी से चिप्स गुडा जो वेस्ट होची ताकू नै कि हम केमिति काम करि परियो किंबा जतेबेले आपण गोटे ग्राइंडिंग टे करूछथि ग्राइंडिंग ऑपरेशन करूछथि जतेबेले ग्राइंडिंग स्लॉज गुडा जतेबेले बाहरुची ताकू हम नै कि केबे यूज करि परियो कथा भाबुछु टू मेक ए यूजफुल प्रोडक्ट जदि करि परियो दैट इज अंडर दैट वेस्ट रिडक्शन रिसर्च सो एंड बुगाटी जानिथिबे गोटे रेसिंग कार मेकिंग तार जो ब्रेक
stones 1986 to start ହେଇଥିଲା statistics company start କରିଥିଲା and 2023 ରେ ଆମେ bioprinting କରିଛୁ and these are the two famous journals on which we can get the up-to-date 3D printing techniques. Research trend, मुझे fast करती है मोड टॉप को करना limited ଅଛି. What is the better additive manufacturing? आपण देखो जबे सिस्रो ଗୋଟେ कंपनी जोटे कि तार मोनास यूनिवर्सिटी रे तार सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग खोलिछि. We are also both Dr. Mishra and me also going to build one of the center of excellence at KIIT University that is the additive manufacturing process. Short piece is open करूछु. जो तरह की metal additive manufacturing and also bioprinting हबो. So it is a 3D printing total assembly of the object. Metal additive manufacturing ने हमें फोकस करिला पारे ना लाइट वेट डिजाइन स्ट्रेट टू वेट रेशियो का भलो होइबो पार्ट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट पार्ट्स को हम असेंबल करके रखि परिबे जॉइन करके रखि परिबे रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेशन प्रोसेस सो वी मस्ट फर्स्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रिंटिंग प्रोसेस दैट्स व्हाई देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन लेसर टाइम मटेरियल इनोवेशन नॉर्मली हमें टाइटेनियम हमें यूज करछे KIIT 6 and 4 भी यूज करछे और इम्पोर्टेंट यूज करछे to make a particular product and sustainability. प्रथम ट्रेंड रे या चलछि मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. सेकंड ट्रेंड चलछि बायो प्रिंटिंग ऊपर जोटा कि सर ऑलरेडी कहि दैछथि मु बेसिकली कहूनी बायो इंक्स हमें प्रोड्यूस करि परिबा जहा ऊपर कोन बायो इंक्स ना बायो इंक्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग the cultured cells and various biocompatible materials. आमो देहरे जो सेल अछि से सेल को लेकी हमें बाहर आउ किछि बायोकम्पैटिबल मटेरियल से मिक्स करके बट हमें बायो इंक प्रोड्यूस करू एवं एई बायो इंक हमरा यूज कोते होछि ना टू मेक ए पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. ट्रेड 3 जो हमें देखिबा सेटा होछि मल्टी मटेरियल मेकिंग और वी कैन tell it as the FGM materials, functionally graded materials. Functionally graded materials में कौन है हमें different materials को join करके हमें उनके product पे बनाओ. Metals हो, polymers हो, ceramics हो, composites हो, different materials को join करके हम उनके product पे बनाएंगे. तो यहाँ पर बहुत काम चलनी चाहिए. That is the multi-material printing. How to make printing available for the multi-materials. Then AI in ML, AI, additive manufacturing. काहे के हमें AI यूज करूं? What is the real use of the AI, artificial intelligence? Process optimization करने वाला होता है. How to reduce the time, processing time. Real time defect detection. Defect को हमें real time में detect करिवार अछि एवं ताको संगे संगे closed loop रे पकेई हमें ताको solve करिवार अछि. That is our real time. देन हमर जो प्रोडक्ट जोडा हम बनौ छै तार प्रोसेसिंग रे हमें जल्दी करिवे प्रोसेसिंग स्पीड में. थर्ड इज द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. एआई यूज करले हमको से कहि देबो जे एई प्रोडक्ट ता केते दिन परे हमको पूर्ण मेंटेनेंस मांगिबो. सो वी कैन डू द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग द एआई. देन जनरेटिव डिजाइन एंड टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन. ता माने होची आमी जो प्रोडक्ट ता बनेबा 3D प्रिंटिंग रे धर गोटे कप टे बनेबा फॉर एग्जांपल कप टे बनेबा कप टा किमिति बनेबा एमिति बॉटम टू टॉप अप्रोच रे करिबा ना टॉप टू बॉटम अप्रोच रे करिबा दैट द एआई कैन टेक ओ प्रोसेस रे करले हमर प्रोसेस टा फास्टर एंड ऑटोमेटिक क्वालिटी एश्योरेंस. सो एआई कैन गिव अस हाउ वी कैन relate the product with the quality. So we can predict the quality. This is the research trend 4. And 5, we are going to use the waste material into the useful product by using the 3D. That is the sustainability.
recyclable feedstock development करिबा material reprocessing techniques हमें develop करिबा near zero waste manufacturing processes को हम develop करिबार अछि एई सब ओ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करछि ना सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करछि तो एई एरिया रे भी बहुत रिसर्च होछि स्पेसिफिकली ऑन द additive These are the various research hubs in the additive manufacturing sector. Who माने काम करछु MIT, which is already there in US, that is Massachusetts Institute of Technology, one of the leading pioneering institute. से कहाँ पे काम करछि? They are basically using the advanced materials and digital design, or we can say nowadays it is digital twin. So in that case, the MIT is doing very well, exceptionally well, and these are some of the centers which are there in the MIT. They are basically focused on these areas. UK and Harvard University, high-speed sintering, 3D concrete printing of the knowledge. They are specific about these techniques. India में भी काम होची, किंतु they are the pioneers. India में जब हम देखिबा, IIT Madras हो, या NCAM, National Center for Advanced Manufacturing, NCAM, which is there in Hyderabad, they are also doing the research on the one, that is where our additive manufacturing, biomedical, additive manufacturing, hybrid systems, so 5D printing, will be composed. And these are some of the startups you can say, that is Srishti Hub, Amist, DRDO, and Boeing, Ministry of Electronics and IT. So, they are some of India. So, these are some of the examples. It already started lecturing. India's first 3D printed house by Prasad at IIT Madras in just 5 days. These are the Indian Army. They will manage two-story disaster resilient house. Second of these one is IIT Hyderabad college. So these are the 3D printed application in case of construction. These are the application of additive manufacturing in health sector. देखो तुम मॉनिटर में कौन से बड़े पार्ट्स नहीं जोड़े गए हमें 3D printing में बनाने. ओके? तो hips बनाऊँचु, अपना toes बनाऊँचु, jaws बनाऊँचु, सब बनाऊँचु, skulls बनाऊँचु. So basically these are the parts which can be built in the additive manufacturing. Aerospace ro wings ho, tar jet engines ho. These are one of the lattice structures. These can also be built in the 3D printing process. This is the application of additive manufacturing in case of automotive. देखो कार जो डैशबोर्ड का है ये डैशबोर्ड का completely made by additive manufacturing process. इधर ऑटो कार में low end कार का use करते हैं ना. It also depends upon our application. जो कार का value minimum 40-50 लाख से इतना से कैमरा में इंजेक्शन को use करते हैं. ना directly injection molding में वही बनाएंगे उस part. Plastic part का भी injection molding में बनाएंगे से बनाएंगे. Okay, in order to reduce our cost. Consumer products, सार बढ़िया एग्जांपल देते हैं, just के दे दीजिए. Rings हो, अपना बैंगल्स हो, हम सब उसका यूज करके लिए, आप करके कि मैं rings हमारा जो टेक्निकल necklace ना पाऊँ, जोड़ा में कोई भी वाला. This is the startup landscape overview throughout the world. Startups, this is one idea जो ओडी बॉडी हमरा बेसिकली स्टार्टअप्स माने अछि से बिगर आप जानि परछे केते स्टार्टअप्स होउछन कोको कंट्री में केते स्टार्टअप्स अछन. Although this is not the recent data, I think this is the data up to 2020, February 2020. I did not get the recent data. So it is the most curious है यही data सब
additive manufacturing systems ଅଛି San Francisco, Boston, Austin ए यूएस रे एई जगह रे सब स्टार्टअप कंपनीज माने अछंती जेमिति कि हमर यूएस रो सिलिकन वैली रे सब आईटी कंपनीज अछंती सेही बलिया एडडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रो सब एई जगह रे अछंती जर्मनी एंड नेदरलैंड्स रो अछंती बर्लिन एंड एडवन these are the various hubs for precision engineering metal additive manufacturing रे हम चाइना एंड जापान शेंजन और टोक्यो ସେମାନେ भी additive manufacturing को adopt करिकि ସେମାନେ एग्रोपोनिस बिल्डिंग कंज्यूमर गुड्स भी बनाउछथि इंडिया रे बेंगलुरु पुणे चेन्नई these are emerging areas emerging cities where the additive manufacturing are normally used and their basically focuses on aerospace healthcare and sustainable manufacturing Indian startup ecosystem our target is 1.78 billion revenue generate karibar by the end of 2030 with a CAGR value of 28.1%. 28.1% हिसाब रे हम बढ़िया अछि एंड एटा आकलन करा जाय छी up to 2030 एंड हमर है हमर सेक्टर के एरिया रे बढ़िया and body and these are the key players you can say the critical players now in India Intel Additive Solutions 3D Objectified Technologies Divide by Zero. These are the company's name. Okay, and they are actively involved in making these type of products. So 3D जो तेरे काम करो ची Divide by Zero से ये काम को नहीं काम करे भी उचित नहीं. Okay, so they are the pioneer players in their particular areas. एटी वाला क्वेश्चन आस्को सर ए पांचोटी कंपनी को काहे आपण देबे ए स्टार्टअप पांचोटी को आपण काहे कि आपण कहउछते काहे कि देखुछु बिकॉज़ इन द इंडिया इफ यू गो देयर from 100 startup companies 90 startup companies fail खाली मात्र 10 टी स्टार्टअप कंपनी जो माने सक्सेस होछु 90% कंपनी फेल होती स्टार्टअप कंपनीज there are different karanam and one of the major reason is the research ठीक अछि additive manufacturing आगे बहुत पैसा अछि additive manufacturing कम परिश्रम रे बहुत पैसा हमको देई पेले जानो देई पड़े कि कोन परिवार अछि we don't have that care हमर ऑब्जेक्टिव कोन फॉर एग्जांपल आपण माने चिंता करंतु जो एबे किसान पूर्ण कहतली हम KIIT रे जो हमें 3 कोटी कि 4 कोटी टका रे जो मैप का हम प्रोड्यूस करिबु जोटा हम डेवलप करिबु KIIT कोन हम छाड़ दबो भाई 4 कोटी टका मु इन्वेस्टमेंट करूची माने मते 10 कोटी टका रेवेन्यू दियो दैट इज द अल्टीमेट एम एंड 10 कोटी टका हमें हमरो ए नॉर्मल पेशेंट्स मानक पाखरु पाई परिबानी एवं आपण मानकु आभामान काळ लागि भी देबेनी टाइम भाई 5 वर्ष भीतर हम 10 कोटी टका फेराओ एटा होचा हमर मोटो तो हाउ टू डू द रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन एट ए टाइम तो सही केस रे वी हैव टू गो टू दिस कंपनीज वी हैव टू रिक्वेस्ट दिस कंपनीज भाई मेरा प्रोडक्ट ये हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई आपके पास में जो है थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी जो है भाई हमको थोड़ा दे दीजिए हम लोग कुछ करेंगे कुछ ट्राई करेंगे जत्ते बेले हमरो सेही बेले प्रिसिजन सेही बेले एक्यूरेसी आसी जीवो सो they are doing exporting their business or we may create our own image there so we are trying to meet with some companies those are doing the additive manufacturing business specifically so startup ecosystem रे गोटे होची materials बहुत रोल प्ले करे सब जानक स्टार्टअप कंपनी सब जानक मटेरियल ऊपर काम करନ୍ତି नाही जैसे हमें प्रीवियस स्लाइड रे देखिले तो हमें मटेरियल इनोवेशन ऊपर काम करि परिबा सस्टेनेबल फीडस्टॉक सस्टेनेबल मटेरियल्स ऊपर काम करि परिबा प्रोसेस कंपैटिबिलिटी ऊपर काम करि परिबा किमिता प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करिबा किमिता प्रोसेस को कंट्रोल करिबा किमिति एनवायरमेंटल कंट्रोल वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ताको हमें किमिति कंट्रोल करि परिबा then that to pick the fight
printers can also be customized. FDM printer हमको छोटे दरकार छोटे दरकार, बड़ा पीस दरकार बड़ा मटेरियल को प्रिंट करने में बड़ा प्रिंटर दरकार, but you should have some knowledge. Provided you should have some research and some knowledge about how to build that particular 3D printing machine. So these are the companies which can customize the 3D printing machines. Eight actually one छोटा machine में तो आए थे, eight actually one बड़ा machine में तो आए थे. Provided by the same company. तो जब हम innovations न करेगा, जब हम research न करेगा printing machine ऊपर, then it may not be withstand the expectation of the consumers. तो मतलब हम आपको केस स्टडीज देखेंगे, केस स्टडीज आपको अभी देखेंगे जल्दी, इसमें कंपनीज विषय में मैं कहिबी, स्टार्टअप कंपनी भी हो, देखो ये मेडिकल इम्प्लांट अछि, जो गोटे टाइटेनियम जॉ को हमें दांत को फिट करि, टाइटेनियम जॉ टाइप ऑफ थिंग, सेटा तो गोटे जनरल मोटर्स गोटे लाइट वेट ऑटोमेटिक ब्रैकेट बनेछि बाय द जनरल मोटर्स. Healthcare में BioLife 4D is one of the very famous company. जो ये भी bioprinting यूज करके वो artificial heart बनेगी, artificial heart, artificial kidney, and we are going to build that one. Yes. Automotive industry में Velocity वाली company होती, जो कि jet engines for parts बनाती. Construction startup में Icon वाली company, जो कि US based company. IIT मैड्रास तो अच्छी, IIT गुवाहाटी तो अच्छी इंडिया है, ये कि एक एक बिल्डिंग से बनेगी. तो वर्तमान केस आसुची कोन ना हमें का सहित कोलाबोरेट करते हैं. वर्तमान जुग या नहीं जे हमें खाली भाई पैरामीटर वेरी करो, इसे ऑप्टिमाइजेशन कर दियो, पेपर चार्ट बाहर कर दियो, जो मैंने पीएचडी करते हुए जानी थी. हां I also did that during my PhD. So bottom scenario and the thinking process should be changed. Bottom government चाहूँगी भाई NAS के अंदर करेगी कि बिल्कुल तमें real product को आसो. तो सही केस है we have to collaborate with some organizations. It may be startup company, it may be research house. So generally additive manufacturing case से हमारा गोटे सेंटर अछि नेशनल सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जोटा कि हैदराबाद रे अछि, ता सहित हम कोलाबोरेट करि परिबा. एवरीवन कैन कोलाबोरेट, हम माने समस्त करि परिबा, बट यू शुड हैव द करेज, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज. यदि अछि देन सम एकेडमिक्स रे भी तमे आईआईटी को प्रोफेसर को पाखो जाओ कि आईआईएस बेंगलोर को प्रोफेसर को पाखो जाओ, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग they can easily collaborate with you. Then government can center of excellence. There are also certain center of excellence. Rajyabad का होता है center of excellence. Okay. You can go there. Department community होती है. तो सही सब जगह से तो हम collaborate करके हमें हमारे research करना पड़ेगा. Globally तो हमें जितना चाहिए इंडिया बाहर का से तो करी करिए. तो बेस्ट प्लेस फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स वी नो दैट जर्मनी. तो जर्मनी में देयर इज ए 200 more than 200 million euros they are funded to the R&D institutes. Okay, so for in Germany is academic रे जो अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी कैंपस से भी हमें कोलैबोरेट करके हमें the only thing is that you should have the knowledge. How this is occurring? Government या institutional support government हमको कौन initiative होची, Indian government कौन initiative होची, जिसमें कि हमारा solar rooftop पाइन जो सब्सिडी हो जाता है, सब्सिडी तो मौजूद है ना कौन इलेक्ट्रिक वेहिकल पे भाई 1.5 लाख सब्सिडी दिया, हमें सब्सिडी पर मौजूद कालिया योजना हो ना कौन. तो सही सब केस रे government these are one of the government initiatives in order to faster adoption
of that particular technology in our library. तो एक केस रे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग केस रे गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव लेछि जोटा कि मैं आपको कहली नेशनल सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेठी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोल कोन अछि एम कोन अछि we have to capture 5% of the market global market by 2025 एई वर्ष एंड सुधा 5% ग्लोबल मार्केट को हमारा इंडियन कंपनीज माने ग्राब करिवे कैप्चर करिवे तो ता भाई 100 न्यू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनुमोदन देछि स्टार्टअप्स माने कोठी करते के इंक्यूबेशन सेंटर रे कर एंड ईस्टर्न इंडिया रे सबटु बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर अछि KIIT रे अछि जोटा कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ता कोनी KIIT TBI I think one of my student is also familiar with that one. So 100 new our target अछि new additive manufacturing startups को बनेबार by the end of 2025. New products also अधिक हम बात करिबार अछि 50 India specific additive manufacturing technologies जोटा कि आपन कहले आइदर अपन मटेरियल रे चेंज करलु या प्रोसेस रे चेंज करलु और ये हमको 50 से अधिक टेक्नोलॉजीज रे न्यू टेक्नोलॉजीज पानिबार अछि 1 lakh skilled professionals should be trained so these are the targets or these are the initiatives taken by the government and center of excellence तापई ए सब जिंस करिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अछि गाजियाबाद रे अछि हैदराबाद रे अछि एंड पुणे रे भी अछि बेंगलुरु रे भी अछि तो ए सब स्टार्टअप्स या जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अछि they are doing this technology तो एठो हम कोन जଣା पड़छि जे जति हमर नॉलेज अछि जति हम एई एरिया रे रिसर्च करिबार अछि we can approach to them they can happily give you the support patent trends देखो IPR filing additive manufacturing रे IPR filing देखो दिनो दिन में बड़ी बड़ी है 2022-23 में जो डाटा लेती from the patent office almost 82,000 patents have been माने patent office filed 82,000 तो हम तो additive manufacturing एरिया रे केते मात्रा रे रिसर्च होउछ जदि हम फ्यूचर डायरेक्शंस देखिबा कोन हम फ्यूचर रे करि परिबा कि को एरिया रे करि परिबा तो कहि देली कौन कौन काम हमें कर परिबा 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग एंड 4D प्रिंटिंग में डिफरेंस तो सार कहि देले 3D प्रिंटिंग रे आपनकर एटा बेड होइला only the nozzle will be moving 4D रे both are moving at the same time that means time here using another dimension time as one of the another dimension एटा जो देखु जंती एटा को कहउछन स्मार्ट मटेरियल्स स्मार्ट मटेरियल्स माने आपण एटा को पुरे पुरे यूज कर दियो तो पुरे छाड़ दियो जे पुरे तार निजर सेट पुरे ओके NITI alloy सेट मेमोरी alloy कहले सेम मेटल मेमोरी अछि ताको जे मैं मौका पका कर दे कि पुरे छाड़ दो से पुरे स्काई and it can be 3D print it can be 3D print आपनकर डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस जोटा कहउछन डिजिटल प्रिंट माने होछि ए रे बहुत काम चलछि हमें गोटे ऑब्जेक्ट बनेलु सिमुलेशन करी संगे संगे हम ऑब्जेक्ट को देखिलु किबा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखुछे किमिति एटा ता पर केते स्ट्रेस आसी जेति के प्रकार एनालिसिस अछि केते टेम्परेचर हबो कोन हबो से जिंस हम करि माने एट ए टाइम a real time virtual replica can be generated of a physical model can be generated जो तरीके काम होता है तो process optimization yes simulations हम कर सकते predictive simulations by using different types of softwares we may use ANSYS we may use console we may use different types of additive manufacturing specific software okay so we may use this simulations before processing CAD model को STL फाइल में कन्वर्ट करिया पूर्व आगे हमें देखि रहछ सब जिंस कार्टा बनेले कोठी स्ट्रेस आसी
जदि आम बोन बनाऊे कैटिलिस्ट बनाऊे से कौटी स्ट्रेस आसो कौटी भांगार चांसेस अच्छी जदि आम धर मोर नीरे लगी 3D प्रिंटेड मटेरियल जदि मुझे पड़गली से फोर्स आसते लोड आसते लोड से भांग तो से अनुसार 3D प्रिंटेड पार्ट्स गुड़ा बना जाए जदि मोर वेट अच्छी 70 केजी तो मोर 70 केजी टाइप जिनसा लगे जदि मोर अच्छी 150 केजी तो मोर 150 केजी भाया लगे it should withstand the load of the body okay so it can be predicted by the simulation process material behavior prediction के करे परिया कारण जो material का हमें body भीतर यूज करूचे that should be biocompatible एना body भीतर यदि रिएक्शन करा then भला भाई हम प्रोसेस बना तो हम जेल में बनाई थी तो सही केस रे हमें कौन करू ना एटा हमर देह सहित केते कंपैटिबल केते बायोकम्पैटिबल सेटा को भी हम देखि परिबे ये एरिया भी अपन माने काम करिबे एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड डिफेक्ट प्रेडिक्शन जदि ओने मेटल पार्ट ता बनौछे तार सिमुलेशंस क्वालिटी तार हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को मैप करिबे पोरोसिटी केते रहउची केते कोडी क्रैक आसीबो कोडी पॉसिबल क्रैक आसीबो केते साइकिल्स पर क्रैक आसीबो फैटिग टेस्टिंग का पूछो से दिसोडा भी हम करते हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग ये भी हमर गोटे होची फ्यूचर केस जोरे कि 5D प्रिंटिंग हो जोंती जोतरे कि बोथ एडिटिव प्रोसेस एंड आल्सो सबट्रैक्टिंग प्रोसेस यूज करा गोटे बड़ कंपनी काम करछे एतरे ता नाम छी रोमी देखाइছে এই যে জিনিসটা ইউজ করা হয়েছে এই জিনিসটা ইউজ করা হয়েছে অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ପାଇଁ এইটা দিস ইজ দ্য এক্সট্রুডর এইটা হচ্ছে আপনাদের এক্সট্রুডর সরি সাবস্ট্রাকশন both addition and subtraction will go side by side तो यहाँ पर कौन होगा ना हमारा प्रोसेस फास्ट होगा हमें प्रोडक्ट को जल्दी सस्टेनेबल इनोवेशंस देखो तो हमें जो पहली वेस्ट प्रोडक्ट जो अछि से वेस्ट प्रोडक्ट को से फिलामेंट दिया जाई छी जेमति हमर प्लास्टिक बोतल्स को हमें रिसाइकिल करके तादरा में उड़े से जो फिलामेंट्स हुआ अछि ये फिलामेंट्स को बाहर करके हमें पूर्ण प्रिंटिंग करछो कारण हमर वर्तमान प्लास्टिक को यूज करिया बे तो जो गुडा हमें यूज जोडा होछि नॉर्मली तो जो पानी बोतल हम जो यूज करछो ताको भी काटी के हमें फिलामेंट्स में कन्वर्ट करके तो यहाँ पे हम कौन दरकार ये सब जिनसे पे कौन दरकार क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज दरकार मैकेनिकल इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग डेवलप परिकरिबेनी तो हम मानको सहित सिविल लोक भी आसे दरकार हम मानको सहित इलेक्ट्रिशियन लोक भी आसे दरकार so it should be collaborative work then lifelong upskilling हमको कभी भाग्य पता नहीं जे भाई मु जानि तो बहुत जानि there is always some scope to upskill our knowledge academia industry collaboration करिया दरकार इमर्जिंग रोल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स भी जानिया दरकार सॉफ्ट स्किल ना माने होछ कोन ना आपण मानकु सॉफ्टवेयर सहित एसोसिएटेड होबा सॉफ्टवेयर किमिति बना भी जीवो तार भी आपण मानकु नॉलेज रहबा दरकार एटी जो माइक्रो कंप्यूटर टा लागि जी जोरे के हम सेटअप करूचे এই কন্ট্রোলরটা भी কি জনা ডিজাইন করেছে তার প্রোগ্রামটা भी কি জনা লিখেছে যদি সিএ লিখেছে মু কাই লিখবি তো যদি আমি সেই নলেজটা को জানিবা তাহলে আমি ଆମ হিসাবে কস্টমাইজ করি কিন্তু ये जो सॉफ्टवेयर देछि इट शुड बी एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर मशीन इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू द यूनिवर्सल मशीन কিন্তু আমি যদি আমাদের প্রসেস কিনা ଗୋଟେ 3D printing machine में যদি डेवलप करिबा तासे যদি हम सॉफ्टवेयर में नॉलेज करबै ଆମେ इंटीग्रेट करिबा so what are the takeaways from this particular presentation technology evolution hochi so we should be a part of the technology evolution we should not stick to the traditional manufacturing rohibo rohichi agu bi rohibo কিন্তু at the same time we should adopt new innovations so
So there is a technology innovation, so evolution, so we should be a part of that. Then research scope, there is ample amount of research scope in additive manufacturing. You can do a fair amount of research in case of 3D printing area. Startups are there. If any one of you is suppose started to working in some startup, how to startup companies build କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି in additive manufacturing, you can get some idea. You can go to those centers, collaboration କରନ୍ତୁ, କାମ start ଛୋଟ କାମ start କରନ୍ତୁ, କାମ start then advanced applications 4D printing ରେ କରିପାରିବା, bio printing ରେ କରିପାରିବା, application ଅଛି collaboration. India aims for 1 lakh skilled professionals, remember that. किंतु दुखर विषय है कि जे हमर वर्तमान मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे पिला हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल रे पिला हो नाती, but yes, manufacturing sectors are growing like a boom. वर्तमान KIIT रे हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग रो प्लेसमेंट सारा अछि प्लेसमेंट एक्टिविटीज रे सारा मत कहउतले जे every student got 2 placements in big companies, किंतु आउरी कंपनी आसु चोंती हमर पिला MNS आसुची, आपन रॉयल एनफील्ड आसुची, वोल्टास आसुची, JSW रो एनर्जी, JSW स्टील, JSW स्टील आयरन बहुत बड़ा कंपनी आसुची, किंतु हमर पिला सब लोग कंप्यूटर साइंस सेक्टर, किंतु मन रखता है कंप्यूटर साइंस होती बेस, मैकेनिकल होती नॉन बेस. ता माने होची कोन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ता माने होची कोन भाई नॉन बेस जे खाउची से बेस खाइ बेली, किंतु जे बेस खाउची से नॉन बेस खाइ बेली माना नहीं. तो कंप्यूटर साइंस देना भाई हम और कंपनीज को ऐसे बेली computer science people are इसमें से खड़ा होते, but I am a true believer of. Thank you. धन्यवाद, जय जगन्नाथ. Thank you once again to our esteemed for that insightful and inspiring talk. Dear participants, we are also truly grateful for your presence and attentive participation. This workshop has been a step forward in our academic and professional journey. So now I would like to felicitate our keynote speakers. I would like to invite first Professor Achyutananda Mishra, Principal of Capital Engineering College, and Professor Prasad Mahanta, HOD Mechanical, and Coordinator Professor Anand Kumar Sahu sir. Please, and our chief guest will be Professor Swayam Vikas Mishra sir. Sir, please. आनंद सर थोड़े सुंदर करताली सहित Thank you once again, sir. Next, I would like to invite our keynote speaker, Professor Prasad Satpathy, sir.
वर्तमान बहुत टाइम हो जाइए निश्चय समस्त को भोक भी लगुव तो आमर बाहर आम लंच प्रोवाइड करूँ आउटसाइड देयर वर्कर टोकन समस्त पाखे किछु अवेलेबल थी 2-3 टोकन आम समस्त को देचु दयाकोरी आपण मैंने समस्ते लंच एंजॉय करूँ पुणी आम सेशन स्टार्ट 1 आवर और समस्ते जोड़ा धन्यवाद।